हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता मेकओवर से। और इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ हेयर कट, एक वी शेप हेयर कट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका था, वो दिखाया है मैंने। थोड़े से कटिंग में मैंने इनका ये वाला शेप दिया है। लेंथ इनकी जो बीच से है वो मैं इक्वल निकालूंगी, और इस कटिंग की इसमें रूल्स कुछ अलग बताऊंगी। जो मैंने और भी वीडियो में अलग अलग रूल्स बताए हैं, अलग अलग तरीके बताए हैं, तो इसमें कुछ अलग तरीका बताऊंगी। मैंने जितने भी हेयर कट के वीडियो डाले हैं, आप देखेंगे कि सारे में कुछ अलग अलग मेरे रूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ अलग ट्रिक होते हैं। तो इसमें भी कुछ अलग ही ट्रिक बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना यार, जिन्हें सीखना है पूरा वॉच करना। चाहे जो भी कटिंग आप करें ना, सबसे पहले आप अच्छे से उसे भिगो लें वाटर से, और इसके बाद कॉम बहुत अच्छे से करें, अंदर से बाहर तक का पूरा कॉम बहुत अच्छे से होना चाहिए। तभी आपकी कटिंग सेटिंग अच्छी आ पाएगी और बार बार रीचेक नहीं करना पड़ेगा। इस कटिंग को करने के लिए बहुत ही इजी सिंपल सा तरीका बताया है, और कोई भी मशीन यूज़ नहीं किया है। लास्ट में सिर्फ कटिंग दिखाया है आखिरी में। तो इसे पूरा वॉच करना यार। इस तरह की कटिंग मैंने बहुत सारे किए हैं, और इसी चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। सब में रूल्स अलग अलग हैं और टिप्स अलग अलग बताया है मैंने। तो कुछ की मैं लिंक शेयर कर दूंगी इस वीडियो में, आप ओपन करके देख सकते हैं। कहीं से कोई डाउट लग रहा हो या मेरी बातें समझ ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी बताने की, और मैं किस तरह से कटिंग इसको कर रही हूँ और आखिरी में किस तरह से शेप दूँगी, वो पूरा वॉच करना। और वॉच करने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और जो मेरे चैनल पे अभी अभी नए आए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूला करें, ताकि एक से एक नए नए वीडियो डालती रहूं और आपके पास आसानी से पहुंच जाए, ईज़िली आप खोल कर के देख सकें।